Good morning, good morning, good morning to all of you. Let's start with this rocking session of accounts. So first we are going to see rules of accounts. I hope you have understood all rules of accounts in detail, traditional approach and modern approach. So your accounting is divided in two parts. One is the traditional approach and one is a modern approach. Whenever you are passing any journal entry, my suggestion, when you are in the learning phase, always go with the traditional approach. So every one of you please write it in the comment section. फटाफट सब लोग लिख लीजिए comment section में कि आपके basic rules of accounts क्या है. So everyone please write it in the comment section, basic rules of accounts. So before starting today's session, first I will quickly revise your basic rules of accounts. First one is a personal account. Personal account is divided in two types. One is a due relationship and second one is a receiving giving relationship. Due relationship कब आता है sir? Due relationship when there is a debtor, debit the debtor. Debtor means जब पैसा receivable है तो debtor है. So याद रखना, whenever we are selling goods, our debtor बेटा exist in the business. Okay, so debtor मतलब जिससे पैसा आने वाला है. And when you purchase something, then creditors, or you expended something, there is a creditor. It's your liability. Okay, so debtor means your asset, creditor means your liability. So debit the debtor, credit the creditor. So next one, when beta you are settle the amount, then in that case you will call it as debit the receiver, credit the giver. So who is receiver? Creditor becomes receiver. So जो creditor था जिसको पैसा देना था, जब हमने दे दिया तो he becomes receiver. तो purchase वाला. So relate with your purchases. And debtor बेटा, debtor कौन हो जाता है? Giver. So debtor becomes giver. Remember. Now real account, sir, real account is related to things. Debit what comes in and credit what goes out. And nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Sir, what is the difference between expense and loss? Expense is which is paid out of pocket, and loss means it's like depreciation. Depreciation क्या होगा? It's not paid out of pocket, it is non-cash expenditure, so it is called as loss. And what is income and gain? So credit all incomes and gains. So tuition fees, professional fees, I already told you in the last session. So sales is my income. Okay, now there is a lot of confusion I have seen on the group ki sir debit expenditure hai ya capital expenditure, revenue expenditure. So we are going to see today in unit number 4 what is capital and revenue expenditure. So today we are going to cover two parts. One is unit number 4. So unit number 1 we have already covered in the last session of chapter 1. Okay, so transaction or events के बीच में difference क्या था? What are the objectives of accounting? What is accounting? What is the procedure of accounting? That we already covered in the last session. And I have told you to maintain two notebooks separately. One is 100 pages का book and second one is 400 pages का book. So 100 pages के book में you will write all concepts in detail, and 400 pages के book में you are going to write all practical examples. So today we are going to start with first our homework, sir. Illustration number 4, 5, 6 I have given in the homework बेटा. So पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा होमवर्क, उसको देख लेंगे. उस होमवर्क के बाद we are going to start with our chapter number 1 unit 4. Today's session I know you can sit up to 120 130, कोई भी थकेगा नहीं. बीच में 5 मिनट का ब्रेक होगा और 130 तक हम लोग बैठने वाले. सिलेबस इज वास्ट और हमें जल्दी से जल्दी दिसंबर में एवरीवन वांट्स टू क्लियर. सो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है. मैं स्केड्यूल बना के दूंगा. दिस इज अ सेकंड सेशन ऑफ आवर बोर्ड ऑफ स्टडीज का, एंड आई नो कि आप लोग अच्छे से मुझे फॉलो कर रहे हो. तो अच्छे से जो भी होमवर्क मैं बोल रहा हूं आप ईमानदारी से कंप्लीट करोगे. और जो बच्चों को ये नहीं करना है बेटा, यू नो द रिजल्ट, out of 100 only 25 26 are going to pass at foundation level. So let's start with chapter number 2 unit 1 homework part, that is a journal entries. चलो journal entries से शुरू करते हैं. Yes, say good morning बेटा, every one of you बेटा good morning बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में. ओम गुप्ता जी ने बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स, वेरी गुड बेटा. एवरीवन हैज टू राइट बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर बेटा कमिंग टू द क्लास और अटेंडिंग लेक्चर्स इन द लाइव वन, और ये आप जब भी अटेंड करते हो तो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप थ्रू फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सभी रूल्स ऑफ अकाउंट्स लिखना है. तो ओम गुप्ता, नाउ ही स्टार्टेड. Devendra, please do, sir, please do slowly. I am getting what you are teaching, but in some time I get confused about the words you do. Yes, beta, definitely you are from science background है, तो थोड़ा सा देवेंद्र जी, yes, आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा. Don't worry. He is SRO student, science background students. Ulta, you will find it better today. It's very simple once you applied the rules of accounts. So don't worry. So revision में जब भी होगा, I will go very fast. Revision में.
वंश अरोरा, गुड मॉर्निंग सर। रीचा कुमारी ने ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। डेबिट द डेटा, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेरी गुड। राउनी जैन, विरशा, कोमलप्रीत कौर, कुमारी जी, नताशा, यस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, कोमलप्रीत ने पूरे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स लिखे हुए हैं। सर आपने जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे प्लीज समझा दीजिए, समझ नहीं आए। यस बेटा राज जी, आज हम लोग अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। सर आई हैव 2 to 3 डाउट्स इन द होमवर्क, यस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। चलो, गुप्ता जी ने वापस से रूल्स ऑफ अकाउंट्स वापस भेज दिए हैं। सर आई मिस लास्ट क्लास, आज चल कल आजचं कळेल का? यस बेटा, आधीचे व्हिडिओ बघू का? माधव पूछ रहा है। सो माधव मराठी में पूछ रहा है। यस बेटा, मराठी आती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, आप आज का लेक्चर्स देख सकते हो, पर पहले का लेक्चर देखा तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके। चलो, बहुत सारे गुड मॉर्निंग आ चुके हैं। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। चलो जल्दी से आ जाइए। सो जर्नल एंट्रीज तो हमने शुरू कर दिया था। मैं तो कौन से क्वेश्चन पे था, शायद से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हमारे हो चुके थे। एंड इलस्ट्रेशन 1 वी हैव फिनिश विथ, एंड आई टोल्ड यू टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 एंड 6। ये 5-6 इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क में दिए थे। 3 इलस्ट्रेशन, सॉरी। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 से आज की शुरुआत करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4, जल्दी से आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, व्हाट इज योर पेज नंबर? और व्हाट इज व्हाई कैश इज अ रियल अकाउंट एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट? यस, आज सब सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेरीज, डोंट वरी। मैं सभी बता दूंगा आपको, कैश रियल क्यों है और बैंक पर्सनल क्यों है, दोनों चीजें बताऊंगा। यस, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? रौनक बोल रहा है कि सर योर वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट, होल कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर सर। थैंक यू बेटा। रौनक, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4, 4 नंबर के इलस्ट्रेशन में आ जाइए। यस, पेज नंबर है आपका स्टडी मटेरियल का 2.19 इज अ पेज नंबर 2.19। यस, एवरीवन रोट 2.19। चलिए, Jha Dilip ji is asking me, sir, how would you know to come to know that is it's a real, personal or nominal? Beta, by applying basic rules of accounts and by doing practice, you will understand it. Don't worry. चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाता है। साहिल इंट्रोड्यूस अ कैपिटल। सर पीपीटी थ्रू बताता हूँ ना, मस्त लगता है बताने को। हाँ सर, ये देखिए प्रेजेंटेशन तैयार है। साहिल introduce a capital of rupees 4,000 through bank. So what is the traditional approach talks about? Traditional approach में कौन से दो अकाउंट आएंगे? Yes, you are already aware. ये transaction we already covered in the illustration number 1. तो इलस्ट्रेशन 1 में ये ऑलरेडी कवर हो चुका था, वापस से एक बार देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच टॉक्स अबाउट आइडेंटिफाई अकाउंट्स। हाउ सर पास दिस एंट्री? डोंट पास डायरेक्टली एंट्री। सर ने क्या सिखाया हुआ है? रूट थ्रू 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई अकाउंट्स। चलो आइडेंटिफाई अकाउंट्स करो, चलो फटाफट। देन वी विल आइडेंटिफाई टाइप एंड देन अप्लाई रूल एंड देन पास एंट्री। कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेगा। एवरीवन गो थ्रू दिस प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। जब गुरु कुछ सिखाता है तो आपको लर्निंग प्रोसेस सिखाता है, एंड वंस यू गेट द ग्रिप ओवर दिस देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, सो डोंट जंप डायरेक्टली, सो ऑलवेज गो थ्रू दिस प्रोसेस। चलिए, सो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? यस, प्रोसेस है बैंक अकाउंट थ्रू बैंक, यहाँ कैश नहीं लाया उसने। एंड सेकंड वन इज साहिल्स कैपिटल अकाउंट। साहिल का कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट है। सर नाउ बैंक व्हाई इट इज अ पर्सनल अकाउंट? सर व्हाई यू टॉक अबाउट इट इज अ पर्सनल अकाउंट? सर बैंक ये है ना, इट इज अ क्रिएटेड वन, इट इज अ आर्टिफिशियल एंटिटी। बैंक का नेम होता है, यू कैन आइडेंटिफाई बाय नेम any bank, SBI bank, Indian bank, central bank, ICICI bank, HDFC bank, you can identify bank by its name। और नेम है तो उसका क्या होगा? याद रखना, नेम होगा तो वो एक
पर्सन कहलाई जाएगी. दो इट इज नॉट नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, बट इट इज अ यस बेटा आर्टिफिशियल पर्सन. और आर्टिफिशियल पर्सन को अकाउंट्स में पर्सनल का ही रूल अप्लाई होता है. इट माइट बी नेचुरल और इट माइट बी आर्टिफिशियल. सो बैंक कौन हुआ? यस सर, नाउ वी अंडरस्टूड. बैंक इज एन आर्टिफिशियल person. Okay, so it's a personal account. It's a personal account. Okay, so many students applied the rules, sir. Cash comes in तो बैंक ये personal है, बैंक ये personal है. And साहिल ये तो बड़ा ऑब्वियस, ही इज अ पर्सनल अकाउंट. सो कैपिटल ये भी पर्सनल है. सर विच रूल यू आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर? सर डेबिट द रिसीवर. सो बैंक में पैसा जमा हुआ, सो बैंक इज अ रिसीवर. ओके, सो बैंक ये रिसीवर बोलो या डेटर भी बोल सकते हो. यू कैन विड्रॉ इट आफ्टरवर्ड्स. सो डेटर भी बोल सकते हो. हियर बोथ रूल्स आर कॉमन बेटा. रिसीवर भी बोल सकते हो और डेटर भी बोल सकते हो. बैंक से पैसा बाद में आप विड्रॉ भी कर सकते हो. एंड क्रेडिट द क्रेडिटर. सर इधर गिवर भी लगा सकता हूँ. यस, हियर यू कैन अप्लाई द गिवर, बट नॉर्मली आई apply creditor because business has to return that money. business को वो पैसा वापस देना है. business has to return that money to that person. so creditor भी बोल सकते हो और giver. normally giver ही लगाओ. yes, but creditor is more accurate according to me. ठीक है. प्लीज मोहिन सिंगला जी, डोंट कॉपी पेस्ट एनी मैसेज. मुझे बाकी भी स्टूडेंट्स के ये देखना पड़ता है. सर इन इंग्लिश यू कैन से. ओके शांति जी. एंड मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, नोट्स आर आई एम गोइंग टू अपलोड दिस नोट्स. डोंट वरी, नोट्स आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे. पर इंपॉर्टेंट इतना ही है कि आप लोग बार बार मुझे बहुत डेंजरस मैसेज मत करो. यू आर नॉट इन एनी प्राइवेट क्लास. हियर योर फैकल्टीज आर रिस्पेक्टेड फैकल्टीज. ऑल आर बोर्ड ऑफ स्टडीज फैकल्टीज. तो आप बिल्कुल भी ऐसे मिसबिहेव मत करना. ये कुछ आपके प्राइवेट में जो करते हो वो मत करना यहाँ पे आपके 11-12 स्टैंडर्ड में. ओके, तो वापस से एक बार मैं बोल देता हूं, बिहेव प्रॉपरली. यस, चलो. एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंटच्या डेबिटला 4000 टू साहिल्स कैपिटल. साहिल के कैपिटल को हम लोग करेंगे 4000. ओके ओके ओके, सो साहिल के कैपिटल को 4000 करेंगे. ठीक है, तो एंट्री यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे वी सॉल्व इलस्ट्रेशन 1 इन सेम वे. ओके, तो वैसा ही आपको कॉपी पेस्ट करना है. अदरवाइज आई विल सेंड यू आंसर्स. अच्छा, मैं इसके आंसर्स आपको भेज दूंगा लिख के बाद में. सो सपोज इफ यू फाइंड एनी एंट्री डिफिकल्ट, यू कैन मार्क ओवर देयर आईएमपी एंट्री. इफ यू गॉट द रॉन्ग एंट्री, यू कैन मार्क देयर आईएमपी करके. ठीक है बेटा. यस, नेक्स्ट वन इज मॉडर्न अप्रोच. नाउ सर मॉडर्न अप्रोच में कैसे थिंकिंग करें? सेम क्वेश्चन इन द मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच टॉक्स अबाउट, यस जल्दी से, मॉडर्न अप्रोच क्या करता है? इट डिवाइड्स इन 5 पार्ट्स. 5 पार्ट्स कौन से है? एसेट, लाइबिलिटी, expense, credit, capital and income. So asset is debit balance, liability, credit balance, capital, credit balance. Now what is balance? Balance means कौन सी साइड बड़ी है. जब लेजर सिखाऊंगा ना, लेजर, डेबिट, टू इफेक्ट्स, पहली दिन ही बोला था, एवरीवन हैज टू गिव टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. करेक्ट है. सो एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, ये रूल अप्लाई करना है. तो हमारा एसेट को डेबिट बैलेंस होता है. व्हेनेवर देयर इज एन एसेट, यू विल रिकॉर्ड इट एज अ डेबिट. Okay, science background students, don't worry. Debit credit is a accounting language. Okay, so accounting language hai, so it has to be tally. So whenever you are giving any transaction ka effect, you give it in two sides. ओके, दो साइड से. एंड व्हेन इट टैलीज तो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली ट्रू एंड फेयर. ओके, सो आपको क्या याद रखना है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, कि एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट. स्लोली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. आफ्टर 4-5 डेज यू कैन इजीली आंसर ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट. एसेट डेबिट, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, कैपिटल होता है क्रेडिट, एक्सपेंस होता है डेबिट एंड इनकम होता है क्रेडिट. तो ये सभी बैलेंसेस होते हैं. ओके सर, सो साहिल इंट्रोड्यूस अ कैपिटल थ्रू बैंक. बैंक में से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया. तो अभी दो चीजें, एक इक्वेशन होगा. व्हाट इज द इक्वेशन? टॉक्स अबाउट एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. लाइबिलिटी प्लस कैपिटल.
लाइबिलिटी इज इक्वल टू सॉरी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, एसेट जो है, एसेट इज बैंक अकाउंट। एसेट में बैंक अकाउंट को डेबिट है, बैंक अकाउंट को डेबिट है। ओके, एसेट में बैंक अकाउंट आएगा एंड कैपिटल, बैंक अकाउंट एसेट में जाने वाला है एंड कैपिटल अकाउंट कैपिटल साइड पे जाएगा, साइल्स कैपिटल, एंड बोथ विल इंक्रीज योर 4000. सो माय बैंक बैलेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग, माय एसेट इज इंक्रीजिंग, माय कैपिटल इज इंक्रीजिंग. सो योर माय बैलेंस शीट इज गोइंग टू टैली, माय बैलेंस शीट इज गोइंग टू टैली. सो इट इज अ फर्स्ट वन, इट इज अ मॉडर्न अप्रोच. माय अप्रोच नॉर्मली ट्रेडिशनल अप्रोच. ओके, मॉडर्न अप्रोच नहीं, लर्निंग फेज में ऑलवेज ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, ओके, ठीक है. बैंक एसेट कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल इज डिफरेंट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है. Snehal is asking me, sir, I'm doing job, that's why I'm not able to attend live lectures. So please guide me. बेटा पक्का जॉब करते हुए आप कर सकते हो. डोंट वरी. सर जी, यू डिड यू मेक द टेलीग्राम ग्रुप, वांट टू ज्वाइन इट टू? ओके, बताता हूँ बेटा. सर आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, शिव पूजन पांडे. बेटा डोंट वरी, हिंदी मीडियम से हो तो क्या हुआ, मैं हिंदी में भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा. और मेरा इंग्लिश इतना भी बेटा एकदम नेक्स्ट लेवल इंग्लिश नहीं है, तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा. सो डोंट वरी बेटा पांडे जी, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. अल्टीमेटली अकाउंटिंग भाषा में बेटा डेबिट एंड क्रेडिट ही होता है, हिंदी रहने दो, इंग्लिश होने दो. अल्टीमेटली हम लोग क्या करने वाले, वही वर्डिंग्स यूज करने वाले. तो मेरा क्या लेक्चर ये कोई लिटरेचर सब्जेक्ट है तो नहीं जो ना समझ में आए? चलिए, कैपिटल लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, कैपिटल ओनर्स कंट्रीब्यूशन होता है. लाइबिलिटी बेटा आउटसाइडर्स से पैसा लिया होता है, आउटसाइडर्स को पैसा देना. तो निकिता, कैपिटल मतलब ओनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, ओनर्स से रिलेटेड होगा तो कैपिटल होएगा. लाइबिलिटी पर बिजनेस को दोनों पैसा रिटर्न करना है, ओनर रहने दो या आउटसाइडर्स होने दो, तो दोनों भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है. ओके, अच्छा सर. कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक. चलो 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 चलो, cash Presenting the withdrawn Motorola Edge Plus. is Citibank. Sir, because of you now I love accounts. Okay, Nikita ji. Sir, when you teach theory, can you please also tell topics from the ICS study material? Yes. Can a regular college student? अरे बेटा आप अभी प्लीज फोकस करना अपने इस पे, बाकी चीजें मेरी तारीफ बाद में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो नेक्स्ट वन, अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच. यस, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करते. कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक. सो फर्स्ट अकाउंट कौन सा होएगा? कैश अकाउंट विल बी द फर्स्ट अकाउंट. सो फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट एंड व्हाट इज द सेकंड अकाउंट सर? बैंक अकाउंट इज द सेकंड अकाउंट. बैंक अकाउंट जो होगा वो सेकंड अकाउंट होगा. सो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. अंडरस्टूड सर? कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. नाउ व्हाट इज कैश अकाउंट? कैश अकाउंट टॉक्स अबाउट रियल का रूल. कैश इज अ रियल. क्यों? क्योंकि कैश इज नॉट पर्सन. कैश मतलब बेटा मनी, गांधी जी. सो गांधी जी क्या है हमारे? यस, आते जाते रहते, कम्स इन गोज आउट. ओके, सो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. सो कैश अकाउंट को कौन सा रूल अप्लाई करना है? यू हैव टू अप्लाई रियल अकाउंट का रूल फॉर द कैश. एंड बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. बैंक कौन सा अकाउंट है? तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. यहां पे कौन सा अकाउंट यूज करना है? क्योंकि बैंक में से पैसा विड्रॉ किया, बैंक इज अ गिवर, बैंक इज अ गिवर एंड कैश कम्स इन. Yes, sir. So cash comes in, debit what comes in, and bank account is a giver. Bank क्या हो जाएगा? Bank is a giver. Everyone clear with the picture? Yes, सबको समझ में आया? Everyone एकदम easy. Cash withdrawn मतलब cash comes into the business. So see, business में cash आ रहा है. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट कैश एंटर्स इनटू द बिजनेस. बिजनेस के एंगल से थिंक करना. डोंट थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ साहिल. साहिल के एंगल से मत सोचना, बिजनेस के एंगल से सोचना. कैश कम्स इनटू द बिजनेस. सो कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड बैंक इज अ गिवर. सो रूल्स अप्लाई करने हैं, रूल्स अप्लाई करने हैं. रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर. यस सर, समझ में आया? ओके सर, illustration 3 I'm going to explain it, don't worry. First we will solve ILU 1, 4 and 5. Entry क्या છે? Cash account debit to bank account. एकदम simple. Take a screenshot if you want, otherwise I will send you the answer, don't worry. Yes, clear.
चलिए नेक्स्ट वन। चलो ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच से भी समझ लो। कैश इज ऑल्सो एसेट, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। कैश के वजह से एसेट बढ़ेगा एंड बैंक के वजह से एसेट रिड्यूस होगा। सो नेट इफेक्ट ऑन दी एसेट साइड जीरो, वन एसेट इंक्रीजिंग वन एसेट डिक्रीजिंग, जीरो। लाइबिलिटी एंड कैपिटल वोंट अफेक्टेड। ओके, सो मॉडर्न अप्रोच ओवर, मॉडर्न अप्रोच ओवर। एक नंबर बेटा, सबको समझ में आया? यस। नेक्स्ट वन, लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम वाई। Loan of ₹500 taken from Y. Loan taken from Y. Loan means cash comes in. Cash you have taken loan cash account, and second one Y account. But we will understand Y as a creditor. We will just understand कि Y account we can't write only Y account. We have to write Y's loan account. So we have to identify na, it is a loan. So we will write it like cash account and Y's loan account. So what are two accounts? Cash account or bank account. You may say bank में उसने पैसा जमा किया. So he has deposited money in the bank, Mr. Y, and Y is a loan account, is a second account. So you can call it as cash or bank account or Y's loan account. Okay, very simple. So many students have written bank account भी correct है, cash account भी correct है. Okay, so he has deposited check, he has given me a check of ₹500 and therefore my bank balance is increasing. So bank is a personal account and bank will receive the money, and Y's loan is a personal account. Again, Y personal account. Now I have to return that money afterwards. So Y is my creditor. Sir, can I apply giver rule here? Yes, you can, but more appropriate, he is our creditor. So bank is a receiver and he is our the creditor. So we have to pay him back. We have to settle that amount. तो Y loan क्या होगा? हमें उसका amount settle करना in future. तो Y कौन हो जाएगा? Y यहाँ पे हो जाएगा creditor. Y कौन हो जाएगा? Creditor. And bank is a receiver. Understood? Very easy. So what is the rule? हो गया bank account debit to Y's loan account, Mr. Y's loan account, ₹500. Simple छे? Yes. Third number over. Yes. Cash account debit to bank loan account. So Y is a creditor. Why Y is a creditor? Madhav is asking. Because we have to pay it back na Madhav. Madhav ये पैसा हमें उसको वापस देना पड़ेगा. And when we have to give that money afterwards, so he is our creditor. Okay. So बाद में हमें उसको पैसा रिटर्न करना है. I have taken a loan. मैंने बैंक से लोन लिया, या सपोज मैंने मेरे ससुर जी से लोन लिया, तो उनका पैसा वापस देना पड़ेगा ना बेटा. मैं वापस नहीं रख सकता वो पैसा, उन्होंने मुझे लोन दिया. तो सो Y is our creditor. हमें उसका पैसा वापस देना है. So he is our creditor. Clear? Yes. कैश भी बोल सकते हो, बैंक भी बोल सकते हो. डोंट वरी, कैश इज ऑल्सो करेक्ट. मॉडर्न अप्रोच में क्या होएगा? बैंक अकाउंट एसेट में आएगा. बैंक अकाउंट विल बी ऑन द एसेट साइड एंड योर लोन इज ऑन द लाइबिलिटी साइड. अभी बैंक बैलेंस विल इंक्रीज एंड योर लाइबिलिटी क्रेडिट साइड इज ऑल्सो इंक्रीज. सो वाइज लोन ऑन द लाइबिलिटी साइड वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट. अंडरस्टूड? वेरी इजी. प्लीज हैव ग्रिप ओवर ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, जल्दी से ये क्वेश्चंस के ऊपर ग्रिप ले लेना. यस. So where to write this? In 400 pages book afterwards, not now. 400 pages के book में लिखना है. Homework. Don't worry. ठीक है? Salary paid ₹300. ₹100 is still payable. 100 is still payable. Salary, traditional approach. Salary account. Now see, this is IMP transaction. Mark this as IMP transaction. Salary account. Now see what is the accrual concept of accounting. Accounting is based on, very important point, accounting is based on accrual concept. Accrual concept, sir. What is accrual? Sir, payment. Now you can see here
our payment is only 300. अपना पेमेंट કેટલો છે? Our payment is only 300. But see, our expenditure is rupees 400 because 100 we have to pay it back. Okay, we have to pay it back. Very, very important question. Salary, over the period you will understand these basics very clearly. Okay, what is the accrual concept? Expenditure we record it on accrual basis. What is the concept? Accrual. See the word accrual. What it means? Accrual means though you have paid or payable, but you will record expenditure by full amount. Full amount से expenditure record करोगे. So salary is my expenditure. I have paid it, so my bank balance is getting reduced. So bank account is a second account, but only 300. Only 300. And still payable. Salary payable means that person to whom I'm going to pay salary. For example, assume Ramesh. रमेश को 100 रुपया वापस देना है. आई हैव टू पे रमेश 100 रुपीज. सो रमेश को 100 रुपीज देना है. एज्यूम करें सुरेश को आई हैव टू पे 50 रुपीज. देन आई हैव टू पे आनंद 100 रुपीज. आई हैव टू पे अभी 50 रुपीज. एंड सेम लाइन पे आई हैव अरमान. सो अरमान को मुझे 500 पे करना है. विठल उसको 1000 रुपया पे करना है. सो देर इज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी. Okay, so I can't write all names of that employees. I cannot write all names of employees, and therefore I will prefer to prepare one group of account to whom these amounts are payable, and these amounts are payable is called as salary payable. Salary payable is a representative personal account. It represents number of employees to whom I have not paid. एक बार हिंदी में क्लियर करता हूं. देखो भाई, सैलरी जो होता है, सैलरी मेरा खर्चा है 400 रुपया. कितना है? 400 रुपया. उसमें से मैंने कितना पे किया? सैलरी 400 है, 300 पे की. तो सैलरी से खर्चा तो 400 है ना. भले पेमेंट आप बाद में करोगे, जिसको अकाउंटिंग भाषा में बोलते एक्रूअल. एक्रूअल मतलब इकट्ठा होना. इकट्ठा होना उसको बोलते एक्रूअल. तो एक्रूड कितना है? 400. सैलरी कितनी एक्रूड है? 400 रुपया एक्रूड है. उसमें से मेरा पेमेंट कितना होने वाला है? सर 300 रुपया आप पे करोगे. एंड 100 रुपीज जो है ना, यू विल पे इन द फ्यूचर. 100 रुपीज आप लोग फ्यूचर में पे करने वाले हो. तो सैलरी पेबल ये मेरी लाइबिलिटी है. अभी सैलरी पेबल कौन से टाइप का अकाउंट हुआ सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सर ये क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? देखो मेरे पास 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं. मैं क्या करता हूं? मैं सब कुछ सैलरी इमीडिएटली नहीं देता. मैं थोड़ी थोड़ी सैलरी देता हूं. क्या डर लगता है कि ये लोग बेटा होटल होगा या मेरा कोई भी इंडस्ट्री होगा तो उसमें से ये निकल गए तो थोड़ा पैसा मैं उनका रिजर्व करके रखता हूं. ओके, 10-15 दिन का सैलरी मैं उनको तुरंत नहीं पे करता. मैं सपोज उनकी सैलरी 500 होगी तो 31 तारीख को 300 देता हूं और 15 तारीख को नेक्स्ट 15 को आई विल पे रिमेनिंग 200 रुपीज. तो मेरा डर नहीं रहेगा कि वो एम्प्लॉय सैलरी लेके चल निकल गया. ऐसा नहीं होगा. तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि सैलरी का पेमेंट बाकी है. यू गॉट द लॉजिक व्हाई पेएबल इज देयर? यस सर, आई अंडरस्टूड व्हाई पेएबल इज देयर. और नॉर्मली यू पे इन द नेक्स्ट ईयर. तो ऐसा भी होगा तो 31 मार्च को यूर सैलरी इज पेएबल. ओके सर. सो सपोज इफ आपके साथ 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं, आपके पास आनंद है, संगम है, अभी है, सपोज विठल है, उसके साथ साथ अरमान है. तो ऐसे 7-8 एम्प्लॉइज है बेटा जिनके पास बेटा आपके सैलरी आपको पे करना है इन फ्यूचर. तो सैलरी आप बाद में पे करोगे उनकी. जितनी पे की उतनी ठीक है, और जितनी पे करनी बाकी है तो मैं सबके, दे आर माई क्रेडिटर्स ना, बिकॉज मुझे उनको पैसा देना है. दे आर माई क्रेडिटर्स. पर उनको एक ग्रुप के अंडर में इकट्ठा करूंगा. वो ग्रुप का नाम होगा सैलरी पेबल. सैलरी payable is a representative personal account. Now I got the concept, sir. Very easy. Salary payable. See, salary is a nominal account, but salary payable is a personal account. चलो 5 बार बोलना है आपको, 5 बार बोलना है. Salary is nominal account, but salary payable is a liability, is a personal account. So salary is expenditure, nominal account, but salary payable is a personal account. Okay, salary is a nominal account and salary payable is a personal account. So salary is a nominal account, salary payable is a personal account. And fifth time, salary is a nominal account and salary payable is a personal account. Sir, I understood it. Very easy. मुझे पूरा समझ में आ गया सर. Salary is a nominal account, salary payable is a personal account. Okay. Sir, can I write it as outstanding salary? Yes, sir. Why not?
इसके नाम क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी, इवन यू कैन राइट accrued salary. Accrued salary is also correct word. Even you can write provision for salary. Even you can write provision for salary. Okay, so all are correct words. ऑल आर पर्सनल अकाउंट। ओके, वही नाम है बेटा जो आपके घर में आपको बोला जाता है। सपोज आपका नाम होगा, एज्यूम करते कि आपका अक्षय नाम है, तो आपको अक्षु कोई बुलाता है, एक शय बुलाता है, एक सोनू बुलाता है, एक बाबू बुलाता है, तो ये सभी एक जैसे ही नाम है। सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड सैलरी, प्रोविजन फॉर सैलरी, ऑल आर पर्सनल अकाउंट। सर सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड सैलरी पेबल ये भी पर्सनल अकाउंट है। अंडरस्टूड सर, वेरी इजी। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सर क्रेडिट द गिवर, बैंक बैलेंस रिड्यूसेस, बैंक इज अ गिवर, एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। सैलरी पेबल means a liability creditor, we have to pay them in future, names of that person. Salary payable क्या है? Represents number of employees with you to whom salary yet not paid. So entry is very simple, salary account debit 400, पूरा 400, to bank 300, and to salary payable, outstanding salary, accrued salary, provision for salary 100 rupees. So this is very very important entry. Easy છે? नो बेटा, वी हैव टू फॉलो फॉर्मेट ऑफ लास्ट जो आपने किया था, वो फॉर्मेट याद रखना है आपको। नहीं, सैलरी 400, टू बैंक 300। सैलरी पेबल क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट। एकदम इजी। ए जयश्री, अभी बहुत बार बताया रे, इतने बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जयश्री फ्रॉम ईआरओ। जयश्री, सैलरी पेबल मतलब क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है, जो आपके पास जिनके सैलरी पे करना बाकी है। आपके पास 8 लोग सैलरी पे करने बाकी है, तो 8 लोगों के नाम लिखते बैठोगे क्या आप? तो उनको एक ग्रुप के अंडर इकट्ठा करोगे, वो ग्रुप का नाम होगा सैलरी पेबल। कितना सिंपल है बेटा, थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल। सीए इज अ कोर्स की थोड़ा सा तो डिग्री, आप ऐसी कोई एरी गेरी डिग्री तो ले नहीं रहे हो। अभी इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आप बोलो कि सैलरी पेबल क्या होता है, तो कैसे चलेगा? सबके कमेंट शो हो रहे, डोंट वरी। इन एग्जाम दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दीज एंट्रीज। फर्स्ट चैप्टर कभी पूछा नहीं है आज तक। yes, it is your basics which are very important in your future life. So how you are thinking about the entries? These are transactions, these are day to day transactions which you will incur, which we are going to face in your real life. Okay, how to practice accounts? Yes Mohin, बताता हूँ how to practice. अच्छा, मैं मॉडर्न अप्रोच में बताऊं सर। मॉडर्न अप्रोच में सैलरी किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर में। कैश बैलेंस, बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट रिड्यूस होगा, एंड कैपिटल अकाउंट। सैलरी जो है ना वो एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली योर कैपिटल गेट्स रिड्यूस। सैलरी के वजह से एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के वजह से कैपिटल गेट्स रिड्यूस, देन योर एसेट बैलेंस इज गोइंग टू रिड्यूस 300 and your liability is going to increase, so 100, so net effect 300 down, and here 300 down is equal to है your liability is increasing, your capital reduce, expenditure के वजह से क्या होएगा? Your expenditure will reduce your profit, so your capital gets decrease and your asset gets also decrease in this case. Modern approach. Furniture purchase rupees 500, last entry. Furniture purchased, furniture and cash, very simple. Furniture, so furniture is a thing na, asset, asset है तो real है, cash is also real account. So furniture comes in, don't open purchase account, you open asset account. Don't open, these are not goods, these are not goods, so don't open purchase account, open furniture account. What comes in? Furniture comes in. What goes out? Cash goes out. So furniture account debit to cash.
500, 500. Easy. Furniture to cash. एकदम easy. Yes. एंड एसेट अप्रोच से फर्नीचर बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम होगा. हैव पेशेंस टिल लास्ट मिनट. यस, नाउ हाउ टू रिवाइज ऑल दीज एंट्रीज. फटाफट फटाफट. सर पूरा समझ में आ गया. टुडे वी अंडरस्टूड अकाउंट्स एज कंपेयर टू लास्ट सेशन, और अच्छे से समझा. मॉडर्न अप्रोच से जाओ भी मत बेटा. मॉडर्न अप्रोच से जाओ भी मत. मॉडर्न अप्रोच हम लोग बाद में देखेंगे. Satya Upadhyay is saying, sir, you are explaining very well. I don't think that I have to go elsewhere to join any extra classes. There is no need actually. अरे बोर्ड ऑफ स्टडीज यू ऑलरेडी पेड 9,500 फॉर रजिस्ट्रेशन ना. हाँ, तो सपोज आपको बहुत ही लगता रहेगा कि भाई पैसे देने ही है, तो मेरा अकाउंट नंबर दे देता हूँ, ऐसे ही दे देना खुश होके, कोई दिक्कत नहीं है. How to memorize these entries? Better memorization is not important. You can understand the logic, and logic once you understood, it's very simple. So what is the weightage of this chapter? Akshat, for this chapter, this is not weightage. This is your lifetime weightage for this chapter. Okay, because this is the base of your accounts. And once you understood all entries clearly, debit and credit, फिर आपको जिंदगी में कभी अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं जाएगा. दिस इज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो. ट्रांजैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. How you are going to pass entries in your real life. See, now I will explain you how to do revision. Sahil introduce the business through bank. चलो जल्दी से कैसे याद करना है. So इधर ही आप लोग लिख सकते हो बैंक अकाउंट and capital account. Bank account will, yes, bank is a receiver, capital is a creditor or giver. So bank account debit to capital. Understood. Revision कैसे होती है? Cash withdrawn from the Citibank. So cash account and bank account. Bank account balance will get decreased and cash account balance will get increased. Cash comes in and bank is a giver. So cash account debit to bank account. So loan taken from Y. So how to understand loan taken from Y? Cash or bank account and Mr. Y's loan account. So cash comes in and Y is our creditor. So Y creditor hai. So cash account debit to Y's loan account. Very simple. Cash comes in. Salary for the month, March 400 rupees. So salary account, bank account and salary payable. Salary payable is a personal account. Okay, salary is a nominal account. So salary debit all expenses, bank balance is getting reduced. So salary account 400 to bank 300 and to salary payable 100. And furniture purchase, furniture account debit to bank account. Furniture comes in, cash goes out or bank is a giver. So furniture account debit to cash or bank. Over. Simple. खत्म हो गया. बैंक गिव्स आउट मनी. अरे क्या यार, मस्त लिख के दिया हुआ है, सब लिख के दिया हुआ है आपको. और क्या चाहिए आपको? ऐसे ऐसे पूरा स्टडी मटेरियल में विथ लॉजिक लिख के दिया हुआ है. मॉडर्न अप्रोच से जाओ ही मत, थोड़ा रुको, सबर करो. इलस्ट्रेशन 5 अभी ये मैं आपके दिमाग में डालेगा बिफोर ब्रेक. इलस्ट्रेशन 5. सर हमारे से ये एंट्रीज करवा लोगे क्या आप? यस, आपसे ये पूरे एंट्रीज में करवाऊंगा, थ्रू करवाऊंगा. कैसे करना है बताऊंगा मैं. ओके, यू कैन. यस, चलो कुछ एंट्रीज देखना है. एक गेम खेलना है फटाफट. 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस एंड आई वांट डायरेक्टली एंट्री. ठीक है, 3 क्वेश्चंस. लेट्स सी हु इज विनर. वी विल बाइफर्केट इट इन 5 पार्ट्स. विनर्स सबसे पहले हमारा वेस्ट साइड है ना, WRO. WRO रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका W से स्टार्ट होता है, वेस्ट वाले ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन करेंगे अभी. सेकंड वन, WRO के बाद तुरंत लेता हूं बेटा साउथ वाले, SRO. ओके, देन ERO वाले, नॉर्थ वाले, सेंट्रल वाले एंड FRO भी है. कुछ फॉरेन के बच्चे भी आते हैं अपने इधर. यस, सो FRO. So now let's play one game. Ready? Yes, everyone is ready. चलो जल्दी से.
सब लोग रेडी? टेल मी इट इन कमेंट सेक्शन. Everyone ready? WRO, SRO, ERO, NRO, CRO, FRO. Yes. Let's play the game. First entry to you. First entry. First entry. Cash deposited into bank. Cash deposited into bank. सबसे तेज कौन है भाई? देखते हैं. सबसे तेज आंसर. Cash deposited in bank. I want direct entry. Yeah? Directly entry. Wrong, wrong, wrong. Anand Gaur, wrong. Janni, wrong. Rudresh, wrong. Cash deposited in the bank. एंड सबसे पहला तेज आंसर देने वाली हमारी सलोनी शर्मा फ्रॉम सीआरओ. सीआरओ की सलोनी. यस बेटा, वेरी गुड. सीआरओ से सलोनी ने सबसे तेज आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया. बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग ना बेटा. एंड डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मींस कैश गोज आउट. विड्रॉवल नहीं किया, डिपॉजिट किया. कैश आपसे बैंक में गया, बैंक इज अ रिसीवर एंड कैश गोज आउट. मेनी स्टूडेंट्स रोट कैश टू बैंक. क्या कर रहे हो भाई? कैश टू बैंक, हाउ इट इज कैश टू बैंक? यू डिपॉजिटेड पैसा, सो कैश गोज आउट इन द बैंक. सबसे तेज आंसर दिया है सलोनी शर्मा. Second question. Second question. Ready for question number 2? Question number 2. Question number 2. Ready हो जाओ. Wrong. जिनको wrong मिला बेटा, I will answer only. I will tell name of that student who wrote answer very fast. Fastest finger fast. Second one. Second question. देखते हैं आप में से कितने प्रतिशत भारतीय आंसर को करेक्ट देते हैं. चलिए, लेट्स प्ले. रेंट 500, पेड 300. रेंट इज 500 बट पेड ओनली 300. बाकी का क्या? यू नो ऑलरेडी. सुमित, यस बेटा, योर क्वेरीज आर विजिबल. एक्चुअली रेंट का आंसर दे दिया है शुभदीप सिन्हा जी, बट रॉन्ग आंसर. विथ अमाउंट आई वांट, विथ अमाउंट. सबसे तेज आंसर अगेन सीआरओ का बंदा. एसआरओ के बंदे ने आंसर दिया नहीं. अजय जी, यू हैव गिवन आंसर बट रॉन्ग आंसर. सीआरओ का बच्चा. रेंट अकाउंट डेबिट कौन है? सीआरओ वाले हमारे सक्षम जी. सीआरओ से सक्षम अग्रवाल. सबसे तेज आंसर. रेंट अकाउंट डेबिट 500, टू कैश और बैंक 300, टू रेंट पेबल. रेंट पेबल ना, like salary payable. What are you doing, my friends? Rent payable. Who is going to write that rent payable, beta? It's 200. Yes. सबसे तेज आंसर दिया था सहाना. You have not wrote the amounts. आउटस्टैंडिंग कौन लिखेगा रे? अमाउंट कौन लिखेगा?
Yes. Yes, Aditya, I will explain it later on. पहले फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस. सर मैंने भी तो दिया था सर. वर्तिका बोल रही है. वर्तिका सबसे तेज आंसर जो होगा वो विनर है. आंसर बहुत लोगों ने करेक्ट दिया है. डोंट वरी. ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग. 600 तो आपके ऐप पे इसमें दिखते हैं. यूट्यूब पे ऐप में अलग रहते हैं. सो now there is no competition. Now CRO is clear cut winner. So I'm not going to ask you third question. Yes, CRO is clear cut winner. तो थर्ड क्वेश्चन में टाई रहता तो मैं बोल सकता था. देयर इज नो टाई ऑल्सो. चलो. सो टुडेज विनर CRO. WRO तो किधर भी नहीं आए बेटा. उम्मीद थी आपसे. ठीक है. बेटर लक नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन. चलो कोई बात नहीं. बढ़िया है. इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाइए. चलो बिफोर ब्रेक इलस्ट्रेशन 5 कर लेते. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूनिट नंबर 4. चलो. नहीं सक्षम ऐसा नहीं करते बेटा. CRO वाले खुश हो गए. हाँ जी बेटा. थर्ड क्वेश्चन नहीं रक्षिता. खत्म. टुडे गेम ओवर. रक्षिता डोंट आस्क फॉर थर्ड क्वेश्चन. CRO आर क्लियर कट विनर. सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू थर्ड क्वेश्चन. चलो एंजॉयड. लेते रहेंगे डेली 1 सेशन फॉर 5 मिनट्स वी विल प्ले. नहीं रे बेटा. 1 मोर नहीं. 1 मोर नहीं. नेक्स्ट टाइम. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5. जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज. अभी देखो. यस. Today you have to write these answers in your fair notebook and I will upload it in your fair notebook. कैसे लिखना है मैं बता दूंगा आपको. Illustration number 5. Ajit started business. If you want to understand logic, so in this way. Bank account debit and Ajit capital. Sir already explained. Bank is a personal account. Ajit is also personal. Bank is a receiver. He is a creditor. So entry will be, or you can write it as a giver, but more appropriate is creditor. Bank account debit to Ajit's capital. So Ajit को पैसा वापस देना in future. So more appropriate creditor है, but giver can be written. अब्दुल बोल रहे हैं मेरा नाम लीजिए. यस बेटा अब्दुल नाम ले लिया तेरा. क्या बीवी बीवी है क्या तू तेरा नाम लेने को. चलो. हमारे में मराठी में बेटा और गुजराती में नहीं पर मराठी में जो होता है ना ऐसा बीवी का नाम लेना रहता है जिसको उखाना करके बोलते. चलो नेक्स्ट वन. ही विड्रॉज कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर. अरे ये भी एंट्री हो गया ना सर. फॉर बिजनेस नॉट फॉर पर्सनल यूज. फॉर बिजनेस. सब बिजनेस क्या हाईलाइट कर रहे हो सर. हाँ यस. कैश इज फॉर विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस. सो कॅश विड्रॉन. तो एंट्री क्या होएगा. कॅशच्या डेबिटला बँकेच्या क्रेडिटला. कैश अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट को क्रेडिट. कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. बैंक इज अ पर्सनल. विड्रॉन. सो कैश कम्स इन and debit credit the giver. We already understood this entry now, so why there is no need to write it again. Okay, so cash account debit to bank account. So yeah, already I explained you, so this is not new entry for you. Chalo third entry. Now see this one. He purchased not asset, goods. So whenever he purchased goods we will open purchases account. Which account. Purchase account. चलो ध्यान दीजिए कौन सा अकाउंट ओपन करना है. चलो 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 पेशेंस रखो. कौन सा अकाउंट ओपन करना है. साई वर्धन जी. प्लीज बेटा don't ask me such silly questions now. How to manage time with your different courses. It's your own choice na. CA course is only you should focus. Other courses beta I won't say ki other courses you don't join other courses, but this is more appropriate course for your future. Chalo. Now try to understand this entry.
परचेसेस अकाउंट ओपन करेगा मैं, वन इज परचेस अकाउंट एंड सेकंड वन इज अ बैंक अकाउंट. कौन से दो अकाउंट ओपन होने वाले? परचेस एंड बैंक. सर व्हेनेवर गुड्स आर देयर, don't open goods account. Okay, 11 12 standard mein many students they open goods account also. Creativity, account is an art. Okay, so kuch bhi open karte hai, goods is not correct account. Correct account is purchases account, which is a more appropriate answer, purchase account. So purchases is a real account also, but more appropriate it is a nominal account. Why? I will tell you the logic. Very simple, very simple. Real and personal, these accounts are carried to next year. For example, suppose if I have motor car which I purchase, this will carry in the second year also. I bought it in the first year, but this will carry in the second year. Okay, that motor car you will carry in the third year also. So it is a real account. But when you don't carry that account to next year, when you transfer that account to P&L, then it is nominal account. Okay, so what is the difference between nominal account and real account? It's very simple. Nominal accounts are transferred to P&L and their balance becomes zero after certain years. So purchases का balance क्या होने वाला है? Purchases का balance zero होने वाला है after certain years. After 1 year, you are going to transfer it to trading account. Now, what is trading account? Sole proprietor final accounts में. So remember only वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो याद करना है क्या? 5 बार बोलना है. कुछ भी चीज याद करना है. सर ने क्या लॉजिक बताया? यू हैव टू राइट इट फॉर यू. प्लीज नोट डाउन इट समवेयर. ऑल दीज थिंग्स विच आई नॉर्मली टॉक फॉर 5 टाइम्स. यस, चलो तो जल्दी से मुझे बताओ व्हाट आई टोल्ड यू बेटा. जल्दी से चलो, और कमेंट सेक्शन में भी लिखना है आपको. एवरीवन हैज टू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन. नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू P&L. Nominal accounts are transferred to P&L. Personal and real account are carried to balance sheet. Chalo, one more time. Nominal accounts are transferred to P&L. Personal and real account are carried to balance sheet. Sir, third one. Nominal accounts are transferred to P&L. Personal and real account are carried to balance sheet. So, चौथी बार. Nominal accounts are transferred to P&L and personal and real account are carried to balance sheet. So, पांचवी बार. Nominal accounts are transferred to P&L. Personal and real account are carried to balance sheet. चलो लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में. चलो 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 फास्ट. Nominal accounts are transferred to P&L. Personal and real accounts are carried to balance sheet. Very good. सक्षम ने लिखा. सक्षम ये मेरा अभी बेस्ट फॉलोअर बन गया है. सक्षम जो मैं बोलता हूं वो करता है. सोलोनी वेरी गुड बेटा. सबसे तेज सक्षम आंसर लिखता है. वेरी गुड. आई गॉट सच न्यू स्टूडेंट्स मिलते हैं ना कि जो मुझे पता चल जाता है बाय लुकिंग इनटू देयर कमेंट्स कि ये लोग अच्छा स्कोर करने वाले. I focus on that students up personally फिर. So मेरे क्या बोलते हैं, गुड लुक्स में रहने दो आपको खुद को. वेरी गुड. Stationery is nominal account beta. Stationery is nominal account. Okay. Stationery is a nominal account. ठीक है. Purchases एंड में जाके जीरो बैलेंस होता है. नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस है ना एंड में जाके जीरो हो जाता है. यू कैन नॉट कैरी टू नेक्स्ट ईयर. सी द डिफरेंस. ओके, सो जब भी आप P&L बनाओगे, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉमिनल अकाउंट्स will transfer to P&L in that year and next year your balance is reopened. So zero balance से आपका होगा new purchases in the next year. But motor car you carry it in the next year. Motor car you carry it in the next year. Motor car को क्या करते हो आप next year में वापस से carry करते हो. Furniture को आप next year में carry करते हो. Capital account को carry करते हो. Loan account को carry करते हो. Stationery को मैंने 4 बार बोला बेटा तुझे अभी तक. It's a nominal account.
अंजलि कितना बड़ा बड़ा लिखेगी बेटा तू? 5 बार भी लिख दिया तूने फटाफट कॉपी पेस्ट करके. वेरी गुड. So our entry will be purchases account debit, nominal account है. Bank is a personal account. Okay. So debit all expenses and bank is a giver. So entry will be purchases account चा debit ला and bank account चा credit ला. ऐसे ने किधर तो नोट भी दिया है रे. परचेसेस रियल अकाउंट है पर एंड में नोट भी दिया हुआ है. परचेसेस इन प्रेजेंट सिनारियो, परचेसेस एंड सेल्स आर कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल बैलेंस जीरो हो रहा है रे. बैलेंस जीरो हो रहा है. क्या कर रहे हो? No, beta. Nominal account, real account, you don't have to write it in the exam. In exam, you will present in the same way. ये देखो ऐसा ही प्रेजेंट करना है. नॉमिनल रियल ये मत करो. डेबिट क्रेडिट ऐसा करना है. कैसे प्रेजेंट करना है? चलो एक काम करते हैं. इलस्ट्रेशन 5 राइट डाउन इट इन योर 400 पेजेस बुक. चलो मैं लिख के देता हूं आपको. मैं लिख के देता हूं. चलो राइट डाउन डेट इलू 5. चलो लिखो फटाफट. हाउ टू राइट इलू 5? पेज नंबर 2.21. Yes, illustration 5, page number 2.21. Date, particulars, write down sequence, date, particulars, JF 1 में ये लिख के देता हूं मैं. एक क्वेश्चन में खुद लिख के दूंगा आपको. चलो राइट डाउन इन योर नोटबुक 400 पेजेस के बुक में. सो फॉर्मेट में लिख के देता हूं पहले. Date particulars. Then you will open one column is called as JF column. छोटा सा डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज. डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज. ड्रॉ फास्ट 1 पेज का फॉर्मेट. ड्रॉ फास्ट. जेफ छोटा सा बनाओ. एक जेफ कॉलम भी बना लो छोटा सा. जेफ मीन्स sorry here LF not JF. LF ledger folio. So what is ledger folio? I will tell you it later, don't worry. Folio means page number. So what is ledger folio? That I will tell you later, don't worry. So how many columns? Date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Ready? Okay, done. चलो डेट कंपलसरी है क्या? नहीं बेटा, नॉट कंपलसरी. If it is given then only date. December 1. December 1 है. चलो December 1 में लिखो. December 1 में लिखो बेटा. चलो फास्ट. What is the entry? Bank account debit. In bracket you can write P. P only in starting time, huh, beta. Don't write it in exam. P stands for personal. To Ajit's capital. Ajit's capital. Being narration is only for concept clarity. Capital introduced. Being capital introduced. This is narration is very simple. You can write in your own way. So being capital introduced, simple English, 4 lakhs. Debit में see the answer how to write it. 4 lakhs, 4 lakhs. Now leave one line. Leave one line. Next one. He withdrew cash for the business from bank. 4th December. He withdrew cash.
cash comes in and bank is a giver. So cash account debit, real, what comes in to bank account, personal, giver, 2000, 2000. Being cash withdrawn from bank. Being cash withdrawn from bank. इजी है. चलो 4 दिसंबर भी हो गया. नाउ 5 December. He purchased goods. So purchase account, making payment through bank. Bank is a second account. When? What is the date? 5 December. 5 December. Purchases account debit. Nominal. This is expenses. Purchases is your expenses to bank account. He has paid through bank. What is the amount? 15,000. Being goods purchased. बस सिंपल. Being goods purchased. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री. नरेशन लिखना जरूरी है क्या? यस. डिसऑनर की एंट्री कौन पूछा रे? रुकना थोड़ा, बोलता हूं ना सब कुछ. शुरुआत नहीं हुई. ये क्या है, कैसा होता है पता है क्या? थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं, अंडे में से बाहर नहीं आना और उनको उड़ना रहता है डायरेक्टली. और वो भी कैसा उड़ना है? वो भी ईगल के जैसा उड़ना है. अरे भाई पहले शुरुआत की है लाइफ की. हाँ, थोड़ा रुको, सब्र करो, फल मिलेगा ना. स्टार्टिंग में ही नहीं तो अभी डिसऑनर. रुकना, ये स्टार्टिंग का एंट्री करने के पहले थोड़ा तो रुक जा. December 10. He purchased furniture and paid by check. नहीं, सोल्ड गुड्स है ना, सोल्ड गुड्स. सॉरी, ही सोल्ड गुड्स. December 8 है. 8 December. सोल्ड गुड्स सर. सोल्ड गुड्स बैंक अकाउंट क्या डेबिटला टू सेल्स. क्या लिखने का? बैंक में पैसा आया ना, माल बेचा. बैंक अकाउंट इज अ रिसीवर. बैंक अकाउंट इज अ रिसीवर. सेल्स इज अवर इनकम, नॉमिनल अकाउंट. तो बैंक अकाउंट च्या डेबिटला नॉमिनल अकाउंट टू एन, टू सेल्स. एन क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, 16,000. कितना अमाउंट है रे? बीइंग गुड्स सोल्ड. ओवर. नेक्स्ट वन. सर आज प्रैक्टिस करने क्या? आज प्रैक्टिस करने की. टुमारो, डे आफ्टर टुमारो अगेन गेम. SRO, CRO, WRO. हाँ, आज बहुत प्रैक्टिस करने की. December 10 2 टाइम्स. बेसिक क्लियर ना, लाइव जिंगल आला है, इतना याद रखो. बेसिक क्लियर चाहिए. इफ वंस अंडरस्टूड बेसिक्स, फिर कोई टेंशन ही नहीं. 10 बार एंट्री पूछने का आते जाते. ए चल ये एंट्री बता. आस्क टू योर फ्रेंड्स. चल टेल मी द एंट्री फॉर परचेसेस ऑफ फर्नीचर पेड बाय चेक. ओ, जो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर is a comes in. Furniture real account comes in. And which is next account? Bank. You paid by check na. So bank is a giver. Amount pay kiya bank ने. Bank is a giver. Amount is 2,500. ठीक है, 2,500. Being furniture. There was some technical problem. We will resume. Yes, take a break of 10 minutes. We will resume after 10 minutes. Don't worry, we'll resume after. So up to December 10 we have finished. We'll start with after 10 minutes बेटा. 10 minutes के बाद हम लोग again we'll start. ठीक है, चलो.
Chalo, welcome back once again. We are on the last transaction. He sold goods to Arvind, rupees 2,400 on credit. That is udhari. So entry is, write down the entry, 12th December. Now video is, yes beta. No problem in the network issue na now. Chalo. एक ही मिनट मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर लेता हूँ. ठीक है. Okay. So write down entry, Arvind, personal. In bracket you can write dater. In exam don't write dater. Huh? To sales. Sales is our income. Sales is our income. Correct? Hai? So sales is our income. 2,400. Being goods sold on credit. Being goods sold on credit. Okay. नरेश भाई जी काटकर देखो, ऐसे क्लास टॉप हो गई तो कैसे चलेगा, ऐसे आपने कमेंट लिखा है. मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि वीडियो जो है वो कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात में बारिश बहुत ज्यादा है, तो हमारे टेक्निकल टीम का पूरा वर्किंग वहीं से होता है. तो आप ऐसे कमेंट करने के पहले ये भी सोचे कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है. ऑल ओवर इंडिया में ये नेटवर्क हमारे सभी फैकल्टीज को कनेक्ट करना, बोर्ड ऑफ स्टडीज का ऐप इतने स्टूडेंट्स के थ्रू रन करना इज नॉट अ जोक. और इस तरीके से ऐसे आपके इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ये फैसिलिटीज दे रही है, तो कभी कभी दिक्कतें आ सकती है. और आप समझ लीजिए कि बारिश के सीजन में ये हो सकता है, आपके इधर भी लाइट्स जाने के चांसेस होंगे आपके एरिया में. यहाँ पे बैकअप होता है हर चीज का, पर फैकल्टीज भी कभी कभी बारिश में ये प्रॉब्लम, मेरे यहाँ पे नेट का स्पीड जो है 2 नेट लगे हुए हैं, फिर भी कभी कभी दिक्कतें आती है. आई लिव इन वेरी हाई सोसाइटी, जहाँ पे भी हमारे नेटवर्क इश्यूज नहीं होते. जियो का हर महीने आप लोग सोचोगे नहीं इतना पेमेंट हम लोग करते हैं, फिर भी दिक्कतें आने के चांसेस है. सो लेट इट बी. ऐसा आप इतना रूड मैसेज किया ना तो फैकल्टी को भी बुरा लगता है. और एक बार नहीं, आपने 15 बार 20 बार ये कमेंट डाला हुआ है. चलो, he sold goods to Arvind rupees 2,400. We have done. 14th December. 14th December. Write down. He purchases goods from Amrit. Purchases account debit to nominal account. Arvind is our creditor. So this is also again purchases from Amrit rupees 10,000. Purchases is our expenditure. Arvind is our creditor. Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit. Yes, beta. Monica, very good, beta. Very good. Next is 14th Feb भी हो गया. He returned goods to Amrit. Now see,
अमृत अकाउंट इफ वी ओपन, चलो एक काम करना, ऑन द रब पेज और इन मार्जिन, इन मार्जिन एकदम ऊपर टॉप ऑफ द मार्जिन, you open one account, Arvind account. Arvind account. Now, science background students, you will understand what is exactly debit and credit. Arvind and Amrit. Okay? Suppose, science background students, let's understand. If you do not have ledger accounts, now this is called as ledger, T format. Yes, it is not beta DRS. Okay. नहीं, कौन सा रिव्यू सिस्टम नहीं है ये आपका. It is T means ledger. Here in accounts, T means ledger. See, if you are science background person and you don't know about debit and credit, how you are going to record it? You will record it like sales. I sold goods to Arvind on Udhari, 2,400. And you will record purchases. Under that, you will record Amrit, 10,000. Correct? Hai? Now you return goods. So you will record it on the minus. You return goods. So you return goods of rupees 500 to Amrit. So 500 rupees you will deduct from his balance. This is how you are recording it in your real life. ठीक है? Now Arvind ने देखो, Arvind paid 2,300 in settlement. So settlement of 300. So you will deduct, minus करोगे 2,300 received. And you will write like this, discount is 100. This is in your real life. You will open this like Arvind account. Okay, but accountancy not talks about these things. Accounting, we record it in debit credit. Okay, accountancy में allowed नहीं है ऐसा notebook में लिखना और ऐसे accounts लिखना. In accounts, we maintain debit and credit. Now see, Arvind here, he is our debtor. And when he pays, he becomes giver. Amrit is our creditor. Credit the creditor. And when we pay him, he becomes receiver. So see, debtor balance always starts from the debit side. Debtor हमेशा debit से शुरू होगा. So debit से शुरू होगा तो to sales account. To sales account 2,400. And Amrit on credit side will start with the debit side, means left hand side. Left hand side is always debit of any ledger account. And Amrit, we will open, we'll write 10,000 on the credit side. When we return goods to Amrit, we will debit his account and we will write to purchase return 500. We have to cancel his balance. So creditor को cancel करना है. And how you are going to cancel any creditor? By giving opposite effect. Sorry, इधर अरविंद नहीं है, इधर अमृत है. Sorry, purchases to अमृत. गलती से लिखा मैंने अरविंद, purchases to अमृत. Yes. Purchases to Amrit. Yes. Purchases to Amrit. And he returns goods 15 को. We will cancel his account. Amrit debit. Why? Creditor cancelled. You can write logic also. Creditor cancelled to purchase return. Purchases के opposite balance. Nominal opposite balance of purchases. Understood the logic? Very simple. 500. Next entry. 16 December
Arvind received from Arvind 2,300. See, now what is the balance of Arvind? 2,400. So I will record by cash 2,300 and see. Now this is not bad debts. Bad debts is a big amount. This is a small amount, 100 rupees. So see the difference. Bad debts is a big amount. And discount allowed, what I will record here, I'm getting less amount. So it is my loss. So discount is rupees 100 and now his account is getting tally. So what is the entry? What is the entry? 2,300 I received. 100 is total amount that I should receive 2,400. So 100 rupees is my loss. देखो अरविंद को मैंने माल कितने का बेचा? 2,400 का. मैंने माल कितने का बेचा? एक बार हिंदी में समझ लो. 2,400 का माल बेचा. तो उसको मैं कौन से साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? डेटर है तो डेबिट छे. जब गिवर होगा तो कैश मिला तो आई एम गोइंग टू not reduce this amount like this. I will write it in the debit credit format. Debit credit format. Debit credit format. So debit credit format talks about cash account ko 2,300 and discount allowed 100 rupees. So how I'm going to record this? Yes. So write down cash or bank account. Real debit what comes in. Red pen se likho discount allowed. This is nominal account. This is my loss. It's not expenditure. It's a loss. So discount allowed is a loss. So what is the entry for discount allowed? Discount allowed to daters. Discount allowed to daters. Write down it in your 100 pages book maybe. बाद में लिख के दूंगा IMP entries. 100 pages के book में IMP entries लिख के दूंगा जो आपको रटनी है. Debit to Arvind. Arvind is giver. Personal account. 2,300, 100, 2,400. Being ऊपर लिखना रह गया. Goods purchased, returned. Being amount received from Arvind. Yes, sir. Understood. Cash account debit, discount allowed debit to Arvind account. Chalo. Fast. 16 number over. He withdrew goods for personal use. Now see, this is IMP entry. He withdrew goods for personal use. Now what happened? He purchases something. He purchases from Amrit 10,000, then 15,000. So purchases total 25,000. But what happens? I normally purchase goods for sale purpose. I purchase it from the market and I sell it in the market. But sometimes I want to use that goods for my personal use. My personal use means capital. But beta, whenever you are debiting capital, whenever you debit for personal use, you will open temporary account which is called as drawings. Drawings means withdraw. Withdraw means draw. Draw matlab पैसा निकालना, goods निकालना. In that case, we debit drawings account. Okay. Whenever it is a personal use, we withdraw goods. So we are receiver, capital receiver, and purchases we are going to cancel. Now this is red pen entry. This is red pen entry. What is the entry? 18 December. Entry is very simple. Purchases cancel किए. So two purchases. Purchases आपने लाए थे, but you cancel it because you use that goods. Correct है? So purchases nominal and we want to cancel it. Normally purchase expenditure. Cancel करना है तो opposite side. Whenever you want to give, whenever you want to cancel any account, opposite effect देना है. Opposite effect. Opposite effect for cancellation. For cancellation, opposite effect. For cancellation, opposite effect. And whenever it is a personal use, drawings is debited. Personal use, drawings is debited. Personal use, drawings is debited. Personal use, drawings is debited.
Personal use, drawings. Drawings is a personal account. It's like capital account. So he is our debtor or receiver. So you can write it as receiver or debtor. Both are correct. Both are correct. More appropriate, debtor. Being red pen tha. Goods withdrawn for personal use. Cash withdrawn for personal use होता तो drawings to cash. It is goods withdrawn. So purchases cancel किए. Purchases cancel किए. 1000. Next entry. December 20. He withdraws cash for personal use. Cash for personal use. So what is the entry? Drawings debit. Drawings debit. To cash. Cash goes out from the business. He withdrawn it, na? Being cash withdrawn for personal use. Business use होता तो bank account to cash account to bank account. Here cash withdrawn. Amount is 2000. He paid telephone charges 110. Date is 24th December. 24th December. चलो थोड़ा सा टाइम है. Yes, easy. Homework easy था. Capital is also debited, but more appropriate drawings. Okay, you can debit capital also, capital account debit to cash, capital to purchase, but more appropriate whenever you are using it for personal use, drawings is debited and at the end it is deducted from the capital. So drawing ये समझ में आता है personal use किया तो. So use when you are using goods for personal use or you are withdrawing cash. So it's better to open capital account के बदले में instead of capital drawings account. Drawings will give you clear picture. चलो. Because goods है ना, you withdrawn goods. Goods है तो purchase है. Purchase cancel करना है इसलिए purchase को credit किया. Sir, why purchase को credit किया? Understood? Yes, your queries are visible, beta. No, beta. Personal is expenses cancel किया. परचेस अकाउंट क्यों किया साक्षी जी? साक्षी जी परचेस अकाउंट इसलिए किया क्योंकि गुड्स विड्रॉ किया तो आपका परचेसेस आपने देखो आपने 10 मैगीज लाए थे बेचने के लिए. 10 मैगीज लाए थे, आपका मैगी का बिजनेस है तो परचेसेस टू कैश आपने एंट्री लाया था. एक मैगी आपने खा लिया तो आपका परचेसेस कितना होना चाहिए? सो यू परचेस ओनली 9 मैगीज which is for business use. So you will cancel your purchases of 1 Maggie, drawings to purchase. ऐसी उसकी एंट्री है. अंडरस्टूड? सो जब भी आप गुड्स विड्रॉ करोगे तो परचेस को क्रेडिट करना. देयरफॉर रेड पेन एंट्री है. रेड पेन है तो याद करना है आपको. ओके. यस. नो जेसु, यू हैव टू राइट इन द सेम वे. जीसू जी जैसा मैं लिख के दे रहा हूं वैसा ही. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, लीव सम स्पेस and then to cash account. This is how you have to write your journal entries in exam. To थोड़ा आगे लिखने का रीजन क्या होता है? Why we write to by giving some space? It can be highlighted. If same लिखा होगा तो it is difficult. So left hand side is debit and right hand side, थोड़ा right hand side is a credit. So this is how you present your accounts. Okay, otherwise it will be looking like एकदम सीधा फॉर्मेट. सो मजा नहीं आएगा उसमें. सो मजा आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाईलाइट करने के लिए वी राइट इट इन द सेम वे. सो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू. ओके. परचेस रिटर्न इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट बेटा. Opposite of purchase, purchase is nominal, so purchase return is also nominal. Cancel your expenditure.
being expenses paid. Next one. Amount paid to Amrit in full settlement. Date क्या है रे डेट? 26. Now what is the balance that we have to pay him? See the Amrit account. 10,000 credit, 500 debit. So 9,500 we have to pay. But we are paying only by check or cash. Nothing is given. So you can write to cash. Or check also, bank bhi chalega. 9450 and balancing figure. You received discount. It's your gain, na? You have to pay 9,500, but you paid only 9450. So you received gain. You received discount. Discount is not loss, it is received. Creditors के केस में discount received होता है. So discount received की entry क्या होगी? Yes, discount received is very simple. Amrit account debit. How much is the balance of Amrit? He is a receiver. 9,500. But we paid him only to cash 9450. What goes out? And red pencil लिखो, to discount received. It's your gain of rupees 50. Being Amrit account settled. Next one. 31st December. 31st December is very simple entry. Stationery, rent and salary to cash or bank. Stationery, debit. Salary, debit. Rent, debit. पहले rent है. Rent, debit. Salary, debit. To cash or bank. How much? 200, 5,000, 2,000. 7,200. Being expenses paid. And last entry by red pen, goods distributed as free sample. Now see, you purchases something for sale purpose, but you have not sold it. Either you used it or you distributed as free sample. So here, this is like advertisement. So you can give debit to advertisement, or you can write head, goods distributed as free sample. This is your expenditure. ये आपका क्या है? Expenditure. To same logic of goods withdrawn for personal use, purchases cancelled. Purchases cancelled. Being goods distributed as free sample. Being goods distributed as free sample. Ekdam simple. So same logic of Maggie. 2,000. We purchase it for sale purpose, but we distributed as free sample. So that Maggie has given oats का Maggie आया अभी देखो. Yes, so free sample उन्होंने दिया तो. So purchases को cancel करेंगे. Okay? Yes. Drawings is a personal account. Capital में से minus होगा. Modern approach में capital. No stock account. Stock account we can't open. Stock we write it on the closing date only. So closing stock की entry, stock कभी नहीं होता है. So this is how you have to practice it. Now how to do practice बेटा? एकदम simple है. So now what is the practice purpose? Yes बेटा, कितना time लगता है देखो practice को. मैं मेरा speed बताता हूँ practice का. So you can follow my speed. Tick tick easy, tick 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 tick. हाँ. So today you will solve it in your rough pages by using tick tick easy technique. Okay? देखो आज tick tick easy को सामने रखते हुए ये करना है आपको.
Ajit started a business with capital of rupees 4 lakh, bank account debit to capital. He withdrew the business cash from the business, cash comes in bank में से giver, cash account debit to bank. He purchases goods by making payment, purchases is our expenditure, bank में से goes out, so purchases account debit to bank is a giver. He sold goods 16,000 and received through check. Sale is my income, so credit balance and bank को debit. Bank account debit, bank is a receiver to sales account. He purchased furniture and paid by check. Furniture comes in, bank is a giver. Furniture account debit to bank. He sold goods to Arvind, उधारी पे. Arvind is my debtor, sale है तो इनकम है, सेल्स है तो क्रेडिट, अरविंद डेबिट, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एकदम सिंपल. ही परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत, अमृत से परचेस किया, परचेसेस एंड अमृत, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर, अमृत इज माय क्रेडिटर, सो 10,000. दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज. देन ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, अमृत को रिटर्न किया, परचेस का अपोजिट, सो परचेसेस को क्रेडिट करना है, अमृत को डेबिट देना है, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. ही रिसीव्ड थ्रू फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट, 2,400 के बदले में 2,300. नाउ ही इज अ गिवर, सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 2,300, but 2,400 is a balance to Arvind 2,400, so it's my loss. I received 100 rupees less, so discount allowed is 100 rupees. He withdrew goods for personal use. Personal use है ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट देंगे टू परचेसेस को कैंसिल किया टू परचेसेस, सिंपल. ही विड्रू कैश फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज तो पर्सनल यूज है तो क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से कैश गोज आउट, सो ड्रॉइंग्स टू कैश. ही पेड टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश. अमृत को फुल सेटलमेंट में 9,450, 9,500 इज बैलेंस, सो अमृत को हम लोग करेंगे डेबिट, ही इज अ रिसीवर, एंड देन डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, सो 10,000 से उसको डेबिट देना है to cash only 9,450, and we received discount of 50 is our gain, so 250 rupees. Stationery account debit, rent account debit, salary account debit to cash, ये भी खत्म हुआ, and goods distributed as free sample, advertisement account debit to purchases, जो last entry था, खत्म. 2 minutes में पूरा recalling होता है, only 2 minutes. So some students are asking me, sir, how to recall it, how to revise it using this technique, बार बार. Sir, how many times we say we should revise all these entries? Minimum 5 times when you are in the learning phase. मिनिमम 5 टाइम्स ये स्पीड मेंटेन करना. ओके, इजी. फ्री सैंपल टू परचेसेस एंट्री करो, और ट्रेडिंग भी करेक्ट है, ट्रेडिंग इज ऑल्सो करेक्ट, लक्षिता. ओके, इंग्लिश में ही पेपर आता है बेटा, हिंदी मीडियम वालों को भी. Practical question 2 and 3 beta, I will explain you in the next session. So your homework will be now 2, 3, today's homework. So next session के पहले 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7 is your homework for the next session. Chalo. Now come to beta your theory part. Last 25 minutes. Yes, now I want 100% focus. So journal entry is now easy. जर्नल एंट्रीज इजी आपके लिए. जर्नल एंट्रीज इजी हो गए आपके लिए बेटा. ठीक है. नाउ टिकटिकी जी चले जाइए. ओके, नाउ यस, कौन से कॉन्सेप्ट पे रुके थे हम लोग लास्ट सेशन में? यस, एनीवन? we have completed बेटा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ना. क्या कंप्लीट हुआ था लास्ट लेक्चर में? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. आई होप. कॉन्सेप्ट नंबर, कैन यू टेल मी द कॉन्सेप्ट नंबर? यस, concept 7. Chalo. Now we will move to concept number 8. Next 20 minutes beta, very important. This first chapter carries 4 marks. Last 4 concepts only. Last 4 concepts. Bookkeeping.
Bookkeeping. Bookkeeping is an activity concerned with recording of data of financial data, finance, money related, relating to business operations in a significant and orderly manner. ठीक है. So bookkeeping, yes, you can write this definition. Concept 8. Concept 8. Take a screenshot. Bookkeeping activity hai. Bookkeeping is only recording. It's not ledger classifying hai. Only recording of your financial data. So this is bookkeeping is part of accounting. It is recording of your data. Chalo. What are objectives? You will write it in the same way. Complete recording of transaction in systematic and logical way, and ascertainment of financial effect on the business. So this is the objective. Complete recording of transaction and ascertainment of financial effect on business. So money ka effect business pe kya hota hai? Financial means money related. So these are the objectives. 2-mark questions. So same concept mein likhna hai objectives. Write down. Take a screenshot. Objective you have to write in same concept. Meaning then objective. Concept 9. Bookkeeping versus accounting. Concept 9. Bookkeeping versus accounting. Bookkeeping means recording of transactions. Accounting is summarizing of data, that is P&L and balance sheet. It constitutes base for accounting. Journal, मैंने बोला ना, journal is your base. Accounting is language of business. Financial statements does not form part of this process. It is part of this process. Write down. Take a screenshot. Take a screenshot. Yes. 100 pages वाली के बुक में नहीं, रिवर्स में लिखना है. You have to write this in reverse बेटा. Start to end नहीं. Chapter 2 आपने start किया था. Managerial decision cannot be taken, can be taken. Subfields, no subfields. Here there are several subfields. Subfields is the next question. Financial position cannot be ascertained, can be ascertained. Take a screenshot. Financial position means balance sheet. Cannot be ascertained, can be ascertained. Bookkeeping means journal entries, beta. Bookkeeping is only journal entries. Okay, very simple. Chalo. So concept number 9 is over. Now we will move to subfields of accounting. Now what are subfields of accounting? Financial accounting. Preparation and interpretation of your financial statements. That is your balance sheet, P&L, historical in nature. Okay, and it will help to prepare profit and loss and balance sheet. Concept 10. Subfields of accounting. Take a screenshot. Take a second. Concept 10. Financial accounting. First subfield. This is subfield number 1. Financial accounting means what? Balance sheet and P&L. Second one. Subfield number 2. Management accounting. Management accounting matlab kya bachcho? This is a decision making. Management means
from which you will take a decision whether to shut down the business or to continue the business, or should I give you some offers. So offers kitne dene hain, discounts. So that will be a management decision. Okay. So manager discharge their functions. Internal reporting to manager. So he can take decisions towards stewardship, planning, control, and decision making. Okay. So management accounting is decision making. ये word आना चाहिए, decision making. So this is a second subfield. Take a screenshot. Concept 10 का second subfield. Note के लिए आता है ये question. What are subfields of accounts? Question number 3. Cost accounting. Cost accounting means beta find out the cost of the product. Account for cost, recording income and expenditure, and ends with the preparation of reports and statements and ascertainment and how to control cost. So cost accounting में ये भी होता है control करना cost को. Take a screenshot. Cost accounting. Write it in 400 pages book. Afterwards, please take it seriously. All these things. If you are not serious about your studies from first day, बेटा it will be difficult afterwards. अभी भी बहुत टाइम है और बाद में बहुत बुरा लगेगा कि कितना टाइम वेस्ट किया. Then you will find it guilty. Yes, I wasted time. इतना टाइम था, but I never studied. And CA करने वालों को remember, CA students, we do not have to tell them कि do study. उनके blood में होता है कि study करना है. Those are only chartered accountants. Social responsibility accounting. Social responsibility. Tata hospitals, Birla Mandir. Yes, ISKCON Mandir सबको पता है. So this is social responsibility. Okay, so businessman ये भी करता है social cost के लिए. Hospitals, schools, Reliance के schools भी है. तो this is incurred by enterprise and social benefits are created. So social responsibility accounting. Take a screenshot. Social responsibility. And last but not least is a HR, human resource accounting. Human resource accounting. Identify, quantify, and report investment made in human resources. So human is also important. So कैसे आप लोग ये करते हो? How you invest in human resources that is not presently accounted under conventional system. ये हम लोग इंडिया में नहीं करते, but बाहर की कंट्रीज में होता है human resource accounting. Over. Concept 10 over. So there are total 5 accountings: financial, management, cost, social responsibility, and HR accounting. Over. Limitations of accounting. Limitations, very simple. Actually, there are no limitations of accounting, but yes, critics always वहां पे होने वाले हैं. So criticism नहीं होगा तो क्या फायदा ना. So everyone, मतलब इतना अच्छा संकेत सर ने पढ़ाया तो भी गालियां देने वाले देने ही वाले. So limitations are always there. Okay. Balance sheet cannot reflect loyalty and skill of person. See, loyalty कभी रिकॉर्ड नहीं होता. Skill of the person. For example, मेरा एक एम्प्लॉय बहुत स्किलफुल है और एक एम्प्लॉय बेटा डब्बा है. तो स्किल बट दोनों का पेमेंट सेम है. सो स्किल्स आर नॉट रिकॉर्डेड. बैलेंस शीट शोज पोजीशन ऑफ अ डे एंड नॉट फ्यूचर. इट इज एज ऑन दैट डेट. सो इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट यू फ्यूचर और पास्ट. इट डज नॉट कंसिडर इन्फ्लेशन. एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट्स. अभी ये नहीं समझेगा अभी आपको जजमेंट क्या है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स परसेंटेज. ओके, समझने वालों को समझ गया होगा. प्रिंसिपल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट. अभी ये क्यों? आई विल टीच यू इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन. एंड लास्ट, कंसिडर्स ओनली एसेट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स एंड डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर सेम आइटम्स लीड्स टू मैनिपुलेशन. ओके, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनिपुलेशन हो सकता है. कैसे? जस्ट नोट डाउन इट. कॉन्सेप्ट 11. आई विल
teach you in other units. Concept 11. Limitations. 4-mark question. इसमें से बहुत सारा नहीं समझेगा. I will teach you in the proper topic, and very, very important, what is chartered accountant role in the society. So chartered accountant area of services. What are his area of services? So as a chartered accountant, my duty, I can maintain books of accounts. I can do audits. Audits means checking. Now statutory audit by company law मैंडेटरी होगा. इंटरनल ऑडिट मतलब यस, सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ऑडिटिंग डिटेल में. टैक्सेशन, आई कैन गिव सर्विस ऑफ टैक्सेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, आई ऑलरेडी टॉट यू. देन फाइनेंशियल एडवाइस आई कैन गिव कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करो. एंड अदर सर्विसेज की बहुत बड़ी रूल्स है. चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, इफ ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही कैन बी डूइंग जॉब इन द इंडस्ट्री. He can do job in the industry. PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी काम कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर जैसे. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज, तो बेटा गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उसमें भी कर सकता है. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत हेल्प करता है. अदर सर्विसेज कौन से, सिर्फ ध्यान देना. सेक्रेटरियल वर्क, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी का काम. शेयर का रजिस्ट्रेशन करना, यूर नेम इन द शेयर सर्टिफिकेट. कंपनी फॉर्मेशन, लिक्विडेशन, बंद करना कंपनी. अर्बिट्रेशन, झगड़ा हुआ सॉर्ट आउट करना, अर्बिट्रेशन. कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. सो दीज आर सम सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. कॉन्सेप्ट 12 लास्ट है. कॉन्सेप्ट 12, रोल ऑफ सीए इन सोसाइटी. So this is your first unit, pure theory unit. And now we are going to start with unit number 4. Unit 4 को शुरुआत करेंगे अभी. Yes, last 15 minutes बेटा, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं होगा हमारा. I know now you are hungry बेटा, but last 15 minutes. 400 पेजेस के बुक में लिखना है. 100 पेजेस के बुक में आई विल टेल यू व्हाट टू राइट. प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट मतलब कौन होता है? सीए दो टाइप के काम कर सकते हैं. सीए कैन डू टू बेटा. ही कैन बी इन प्रैक्टिस, ही कैन गिव यू नो गाइडेंस, और ही कैन डू टैक्स ऑडिट्स. एंड जॉब कर सकता है. सो ही इज इन इंडस्ट्री. ओके, सो जॉब इज इंडस्ट्री में, अदरवाइज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, सो आफ्टर डूइंग सीए यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स इन योर articleship. So don't waste time in understanding all these things now. Yes. Unit 4 in which book? In 400 pages book only. चलो last one. जल्दी से आ जाइए. Now very very important section. Only 15 minutes I want. Okay? I want only 15 minutes. Unit number 4. So what is unit number 4? It is very important. What is the difference between capital expenditure and revenue expenditure? So what is the difference between capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt and revenue receipt? Now what is the difference? Understand. What we have to understand? Introduction part. सबसे पहले introduction. Understand it. Why to analyze expenditure as capital or revenue? Now, what is capital expenditure? Now, for ascertaining the periodical business results, whether transaction is of capital or revenue in nature, are to be transferred to P&L. See, P&L में जो जाता है वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, और बैलेंस शीट में जो जाता है वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है. सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट 1
of Unit 4. Unit 2 and 3, I will take it in the next sessions. 2 is last session I'm going to consider. 3 is your beta only key points hai, glossary jaisa. So I'm not going to take that chapter. Unit number 3 is only summary hai, all words ka. It's like dictionary of accounts. Okay, so unit 3 is not important. Unit 4, we are starting. What is the difference between capital expenditure and revenue expenditure? So capital expenditure, which we record it in the balance sheet. कहाँ पे record होता है? Balance sheet में. Understand it carefully. Very, very important. ये chapter is for very important 4 marks का chapter है. And very simple question. Once you got the difference. तो एक बार difference समझ में आया, तो it is very simple chapter. So remember, revenue transaction we record it in P&L. Revenue transaction we record it in P&L. And capital transaction we record it in the balance sheet. So everyone, 5 times, 5 times, 5 times, 5 times. P&L revenue transaction. Balance sheet capital transaction. Write it in comment section also. P&L revenue transactions. Balance sheet capital transactions. 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 Revenue receipt versus capital receipts. P&L में revenue receipt जाएगा, capital receipt liability side पे जाएगा. Revenue income है, credit है, income. Normal business में जो आता है, that is revenue receipt. Sir, example. If you have taken loan receipt है, but not revenue receipt, is a capital receipt. Loan taken is a capital receipt. If I am getting revenue from classes, revenue receipt. I am getting receipts from classes. I am getting receipts from clients. I am getting receipt from audits is my revenue receipt. इसको क्या बोलूंगा मैं? Revenue receipt. If loan is taken, it is capital receipt. Sale of goods, interest received are revenue in nature. Is credited to P&L. कहां पे जाने वाला है? P&L में. Okay. Concept 2. Concept 2. Revenue receipts. Take a screenshot. Concept 2. Revenue receipt. Credited to P&L. थोड़ा theory है पर interesting है. Please have patience till last minute. You are CA students. You are not ordinary students. जिनमें patience बहुत है और हमें CA करना ही है. ये याद रखो. तो कितने भी जुलूम आप सर हमारे ऊपर करो. You tell us to sit for more than 3 hours. We can sit on one place because we are CA student. And if you want to give up, बेटा इतना भी boring lecture नहीं है. It is very interesting session. New concepts you are getting. What is revenue nature, capital nature, and sir is telling you all important points in detail. So it's okay, sir. If you tell us to sit for more than 2 hours, it is not. We are mentally prepared. We are mentally prepared for these things, sir. So revenue receipt is that in which we are getting it in the normal business as a revenue receipt, sale of goods, receipt of interest, and this is credited to P&L. This is credited to P&L. Okay. Next. Next one. Which are not in revenue in nature is called as capital receipt. So capital receipt is very simple. Example, sale of fixed asset. So fixed asset बेचना ये capital receipt है. And normally it is carried to balance sheet. Wait, ये
Profit we record it in P&L, but it is one example. Or loan taken. Chalo, capital receipt which are not in revenue in nature. Yes. Capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure, concept 3. First, revenue expenditure. Concept 3 में revenue expenditure. Expenditure which are related to normal business, that is day-to-day operations. For example, advertisement, salary, rent, etc. are debited to P&L. So revenue expenditure we debit it in the P&L account. कहाँ पे डेबिट करेंगे? इट्स अ एक्सपेंडिचर. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. रिसीट होता तो क्रेडिट होता. एक्सपेंडिचर है तो डेबिट है. एक सेकंड, टेक अ स्क्रीनशॉट. कॉन्सेप्ट 3. एक मिनट. कॉन्सेप्ट 3. Capital expenditure for which you are getting benefit more than 1 year. 1 year से ज्यादा benefit होगा तो you will take it in the revenue expenditure, नहीं capital expenditure, where you are going to consider it in the capital expenditure. So expenditure that generates enduring benefits over more than 1 year. Yes, beta Uma, you can. Sir, examples I'm going to give you. You are going to tell me all these examples by reading all illustrations of unit number 4. Today is your homework, that unit 4 ये आपको खुद से करना है. I will tell you homework at the end. ठीक है? Concept 3. Yes. Purchase of fixed asset, etc. And it is carried to balance sheet. Sorry. Take a screenshot once again. Now take a screenshot. Concept 3 का capital expenditure. That previous please screenshot delete it. ये capital expenditure का screenshot है. Easy. Now concept 4. What are the considerations? This is now last concept. Concept 4 of the day. What are the concept 4 में consideration in determining capital versus revenue expenditure? How you are going to bifurcate whether this expenditure is capital or revenue? Number 1, nature of business. If I'm a furniture dealer, for me buying and selling furniture is a revenue expenditure, is day to day. Revenue means day to day. It's a day to day expenditure. And when beta, I'm not a furniture dealer, I'm a chartered accountant, and I'm buying a furniture, it is not my business, it is my asset. So for me, if I'm a furniture dealer, it's goods. Furniture is goods for me, if I'm a furniture dealer. But if I'm not a furniture dealer, तो मेरे लिए furniture asset है. देखो भाई, मेरा business ही मोटर कार लेना बेचना है. तो मोटर कार ये मेरा क्या होगा? It's my inventory. It's my revenue. In nature, expenditure, revenue expenditure. But motor car, if I'm using it as a chartered accountant for my client purpose के लिए, so beta motor car is my asset. So that is a difference. So look at the nature of the business. So nature is very important. Recurring in nature. If it is recurring, then beta revenue बार बार आएगा. It is one of the consideration. It is not final consideration. It is one of the consideration. And it is one time, that is non-recurring, so revenue expenditure, capital expenditure. Purpose of expenditure. What is the purpose? Normal course of business में maintenance, so repairs is revenue expenditure. Major repairs, major,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी सर्विसिंग को दिया. इफ यू हैव गिवन योर बाइक फॉर सर्विसिंग, basic servicing, then beta this is normal business, this is expenditure. That servicing cost is your revenue expenditure. But beta you have given your bike for change in engine badalna hai, so this is your capital expenditure. Purpose is important. Take a screenshot. Concept number 4, take a screenshot. So revenue में कौन जाएगा और capital में कौन जाएगा? Normal होगा revenue छे, रेगुलरली है रेवेन्यू छे. यस सक्षम. रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी फॉर करंट पीरियड. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल का खर्चा है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत साल तक फायदा होगा, ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, स्मॉल, लोअर, हाई. रिपेयर एक्सपेंडिचर, फर्स्ट हैंड मशीनरी, revenue expenditure, but repairs on second hand machinery, then it is capital expenditure. We are going to solve questions on this. Take a screenshot. 4, 5, 6. All concepts over. Now what is your homework? Now your homework is see, solve all these illustrations, 6 illustrations. After writing all concepts, capital expenditure and revenue expenditure, you solve these illustrations and we will discuss in the next period. Okay, so next period mein I am going to explain you unit number 5 and we will solve all these illustration, capital expenditure versus revenue expenditure. So what is more important? So in, suppose if I want to give a summary of this revenue expenditure and capital expenditure, I will give you it very short. So revenue expenditure क्या होता है बेटा? Revenue expenditure जो P&L में जाता है, capital expenditure जो asset side पे जाता है. Revenue receipt P&L के credit side में जाएगा, capital receipt liability side पे जाएगा. Revenue मतलब रोज का खर्चा, वन टाइम खर्चा होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेशन. इट इज नॉट 100% की ऐसा ही होगा, बिकॉज देर आर सम एक्सेप्शंस. दो इट इज वन टाइम बट इट डज नॉट जनरेट एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, देन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू इट इन द नेक्स्ट सेशन. सो वेरी सिंपल समरी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो P&L के डेबिट में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो एसेट पे जाता है, रेवेन्यू रिसीट जो P&L के क्रेडिट में जाती है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट मतलब जो लाइबिलिटी में जाते हैं. सर, इन टुडे सेशन व्हाट वी अंडरस्टूड इन टुडे सेशन, सो आज का आउटकम क्या है? व्हाट इज आउटकम? सो आफ्टर 2 hours ऑफ लर्निंग, व्हाट यू अंडरस्टूड? आउटकम ऑफ दिस सेशन इज, नाउ you can pass journal entries without any hesitation, without any difficulty. Still there are some difficulties, but don't worry. So ye journal entries, now sir I have improved my logic way. Now I can identify accounts, now I can identify types of accounts. So now I can apply the rule and now I can pass the entry. So very simple. आज sir हमें बहुत अच्छे से समझ में आया. We will do the practice. Now what is the requirement? We will do practice. You ask these entries to your friends, all these entries, purchase goods, sold goods, and if you can answer it very well, बेटा आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा. Okay, sir, are you going to ask these entries? Yes, I will ask these entries. Sir, if I want to ask you these entries in face to face way, तो yes, मैं उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट होता है क्या देखता हूँ आपके साथ. दूसरा, फेस टू फेस वे मीन्स मतलब आपका आवाज मुझे आएगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है क्या देखेंगे. दूसरा, जर्नल एंट्रीज जो है वो हम लोगों ने किया. उसके बाद आज हमने और क्या देखा? कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड तीसरा, दैट सबफिल्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग क्या है. You understood bookkeeping means recording, what are objectives. Then you understood subfield and role of chartered accountants, and other than that limitations of accounting. So ये चीजें हमने सीखी
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक मीनिंग समझ लिया. एंड टुडे व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क इज वेरी सिंपल. जर्नल एंट्रीज का 2, 3, 7 and if possible TYK. Now what is TYK? That I will tell you in the next session. And second one, unit 4 illustrations all. And third one, complete your 400 pages की book. Complete your 400 pages की book. Okay, so end to start. Okay, illustration 4 you are going to fare it. Illustration 1 we already have done. Illu 4 you are going to do it in fair. Illu 5 we have done today, and remaining theory part you will finish it from the end to start. मतलब पीछे से आपने शुरू किया था. Thank you. So it's almost 1:21. I thank you all for having your patience till last minute. और ऐसे ही पढ़ते रहना. So next session और अच्छे से समझ में आएंगे. Thank you all.